This is nice. This view is so good. Soon I will get money. Soon. First and the foremost thing about hello, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing well. So this video is mainly about my January favorites or 2025 favorites from Amazon. So currently Amazon is throwing a sale till 13th of Feb, Valentine's Day sale. So I thought I'll show you my favorites from Amazon so that you can give to your loved ones also. मोर देन दैट मेरा मनी मैनेजमेंट कैसे है, मैं कैसे स्पेंड करती हूँ अपनी मनी. आई नो आई एम नॉट अ बिग इकोनॉमिक प्लानर, सब क्या देखना पड़ रहा है. अच्छा है मैं अंधा हूँ. बट स्टिल जैसे मैं करती हूँ वैसे सब कुछ आपको बता दूंगी. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट प्रोडक्ट इज फ्रॉम द ब्रांड मामा अर्थ. इनका जो कोल्ड क्रीम है उसका वेरिएंट ऑफ हनी मलाई, ये मेरा 4th बॉटल है. एक मेरे पास इसका बैकअप भी है. इफ यू फॉलो मी यू नो दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट. लाइक लिटरली ये तो हो गया, ये विंटर मतलब विंटर में पूरा दिन ये करता रहता है. मैं सिर्फ कोल्ड क्रीम है तो सिर्फ फेस में नहीं, हैंड्स और लेग्स में भी यूज़ करती हूँ. so nice, this is so nice. It has a thick texture as you can see. cold cream है तो ऐसे ही होगा, but it gives that perfect moisturizer for me because मेरा ड्राई स्किन है तो मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब वर्क करता है. आई डोंट नो किसी किसी को ये मतलब थोड़ा ऑयली लगता है, बट स्टिल आई लाइक इट. सो आई विल recommend you to try it out. Do check it out. That is this sunscreen from LA Shield. This is their Mineral Sunscreen Gel Pollution Protect SPF 50 PA+++, lightweight and oil free. It's a mineral sunscreen. I know some people don't like mineral sunscreen. Mineral sunscreen में थोड़ा thick होता है और थोड़ा white cast देते हैं, but still if you don't like makeup और थोड़ा glow चाहिए, still you need to protect your skin. Is your this is your buddy. दिखाती हूँ, ये थोड़ा इट्स वेरी मॉइस्चराइजिंग, बहुत प्रोटेक्शन देते हैं, स्किन को थोड़ा ब्राइट कर देते हैं एक्चुअली. आई डोंट नो व्हाई, हाउ, व्हेन, कैसे पता नहीं मुझे, बिकॉज इसमें वाइट कास्ट ऑब्वियसली होते हैं एज यू कैन सी, बट आई लाइक इट. मेरे को मतलब बहुत हर सनस्क्रीन पसंद नहीं है तो मुझे ये पसंद है. मुझे मेरा सेकेंड बॉटल है. थर्ड वन इज अ लिप प्रोडक्ट. दिस ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है. दिस फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी किस कैंडी लिप बाम. ये एक्चुअली पहले आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ लिप बाम्स और मैं लिप बाम ज़्यादा नहीं यूज़ करती, बट आफ्टर रियलाइजिंग द वर्थ ऑफ इट आई एम लाइक it has changed my concept for lip balms. Actually it's so moisturizing, so good, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज कर देते हैं. इट्स अ ड्यूप ऑफ लेनेज लिप बाम which is too much costlier than this. This is like 100 rupees, below 100, something like 120 150 rupees में मिल जाता है. This is so moisturizing. See, it looks like a jam. Smells also good. This is 01 peach. Oh, ये क्या कर दिया. It's thick in nature, but still it's good. It's actually work product is from the brand L'Oreal Paris. It's their Infallible lipstick. इसका पूरा फुल वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में है, बट दिस इज माई फेवरेट शेड. दिस इज अ शेड 635 वर्थ इट मीडियम. Actually worth it is a shade which was recommended by Alia Bhatt in her videos, but ये जो है मैंने मुझे ट्राई करना था because worth it was very lighter, like मेरे लिए वो ऐप नहीं था, but this one, this is the best shade of this collection I would say.
दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, बट अभी तो लिप ग्लॉस भी डाल दिया. You can't see the shade. Let me swatch it for you. See, the perfect nude for my skin tone. If you are of my skin tone or lighter than me, this will be your perfect nude. ये इतना लॉन्ग लास्टिंग है, इतना लॉन्ग लास्टिंग है, इतना सॉफ्ट है, डजंट फील सो हेवी एंड इट फील्स सो लाइट एंड कभी भी लिप्स को ड्राई नहीं करती. इसका फॉर्मुलेशन इज द बेस्ट. दिस इज अ परफ्यूम फ्रॉम द ब्रांड Yardley London. Be a star ED perfume. This is, look at this bottle. ये ऑलमोस्ट फिनिश्ड, कुछ है ही नहीं. ये 200 समथिंग का है, बट फॉर 200 रुपीज दिस इज सो वर्थ इट. बिकॉज एक तो इसका स्मेल बहुत माइल्ड है, लाइक इट फील्स लाइक बंच ऑफ बुके और वेरी लाइट 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 फ्लोरल स्मेल है. आई थिंक टॉप नोट्स में citrusy kind of, like after some time it feels like citrus fruit, but still the top note is like floral. And this is so long lasting, at least 8 to 10 hours टिकता है. एंड रीअप्लाई आप कर सकते हो, वैसे हेवी नहीं लगता. दिस इज सो नाइस प्रोडक्ट. फॉर 200 रुपीज इज वर्थ बाई. प्लीज डू बाई. अगर किसी को गिफ्ट करना है तो भी दे सकते हैं. एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज अ वॉच. दिस इज फ्रॉम कैसियो. ये सबका फेवरेट है एक्चुअली, एज यू कैन सी. ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पहन रखा था, तो मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर करती हूँ. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेट दिस थिंग, बट अगर उनके पास बुक है, जो मैनुअल बुक है, उसको देख के आप कर सकते हो. दिस इज सो गुड प्रोडक्ट बिकॉज ये कैजुअल वेयर के साथ भी जाते हैं, ट्रेडिशनल वेयर के साथ भी जाते हैं. कैन गो बोथ, कैन डू बोथ. सो दिस इज माई बेस्ट बाय ऑफ 2025. एंड ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी एक कैसियो वॉच है, ये गिफ्टेड था, बट दिस वन I bought it for myself and this is so good. Now we will talk about our money management, the most important part of this video. So salary तो सबका मतलब बराबर है, like every government central government servant का पे स्केल बराबर है. अलाउंस डिफर करते हैं बट स्टिल somewhat बराबर है. तो I'm not earning anything from YouTube yet, but soon I will get मनी सून. बट इतना भी नहीं है कि यूट्यूब से मेरा सारा खर्चा चले जाएगा. इट्स जस्ट पॉकेट मनी फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल तो है नहीं, इतना व्यूज़ भी नहीं आते, तो इट्स ओके, ऐसे ही मिलते हैं मुझे. सो आई एम नॉट करंटली अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम यूट्यूब. ओनली थिंग आई अर्न इज यू गाइस, यू माई सब्सक्राइबर्स. एंड अब तो सैलरी तो लगभग सेम ही होगा. तो मैं पर्सनली 50% ऑफ माई सैलरी सेव करती हूँ और बाकी 50% खर्च करती हूँ. उसमें से थोड़ा लाइक दैट 50% इज माई फिक्स्ड सेविंग. ट्राई टू सेव 50%. इट्स नॉट लाइक एवरी मंथ मैं 50% ही सेव करती हूँ. नो, इट डजंट हैपन लाइक दिस. समटाइम्स कुछ कुछ हो जाता है तो इधर उधर चले जाते हैं कैश. But I will try to save 50% every month. You guys also should learn this from me. कितने शानदार विचार रखते हैं. I think you should save 90%, but होता नहीं है एक्चुअली. 40-60% तक ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं लग रहा कि होता है. मेरे से तो नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा खर्चा होता है. होता है, पता नहीं क्यों होता है. मेरा मेन खर्चा तो शॉपिंग में चले जाते हैं. मेरा 20% मनी शॉपिंग में चले जाते हैं. बट आई फील लाइक उतना भी मैं नहीं खर्च करती कि भाई पूरा सैलरी उड़ा दिया. बट स्टिल आई फील सो, मेरे सेल्फ एस्टीम बढ़ जाते हैं जब मैं शॉप करती हूँ, पता नहीं क्यों. आई फील दिस इज माई थेरापी एक्चुअली. सो आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ व्हेन आई शॉप. सो आई थिंक we all should do something for ourselves. So this is my therapy.
सो इसके लिए मुझे रिग्रेट नहीं है, बट कंट्रोल करती हूँ अपने आप को, बट स्टिल आई हैव नो रिग्रेट्स बिकॉज मैं इतना भी एक्सट्रीम शॉपaholic नहीं हूँ, बट आई नो आई डू शॉप अ लॉट. देन दैट इज इट. ट्राई माई बेस्ट दिस ईयर टू मैनेज माई मनी मोर इफेक्टिवली. जब होगा तब आपको बता जाऊंगी. So come with another video. Till then, bye bye.